सर, I wanted to ask कि for example आज क्या हुआ कि I was I thought कि I will do attention on the body meditation, बिल्कुल बॉडी पार्ट चूज करके वहाँ पे अटेंशन रखूंगा. But for some factors it felt too difficult, or I don't know, but I was not able to basically stay with it. uh, ऋषभ, आपकी आवाज I साफ was not. नहीं आती बहुत। अच्छा, excellent. हेलो. आवाज हेलो. कुछ इज साफ बेटर नहीं नाउ? है। बेटर नाउ? आवाज आवाज साफ नहीं है बेटा, तो समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड. अब ठीक आ रही है सर? हेलो. हाँ बोलिए हेलो. बोलिए सक्षम, हाँ हाँ. बोलिए। तो सर बेसिकली आज जैसे मैंने डिसाइड किया कि आई विल मेडिटेट समवेयर ऑन द बॉडी, और वो करते करते मेरे से मतलब ज्यादा देर हुआ नहीं वो. फॉर सम रीजन, फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजन, बट आई कुड नॉट स्टे विद इट. तो आई डिसाइडेड फिर बीच में कि आई विल डू वॉकिंग मेडिटेशन. तो मतलब इस चीज का मेरे को थोड़ा पूछना था कि जैसे बीच में चेंज कि मेरे को क्या करना चाहिए. सो इज इट मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग में तो इंटेंशन रखते हैं ना कि डिलीजेंस पे वी शुड कंप्लीट वट एवर वी थॉट ऑफ डूइंग. Should I have stayed with it even though it was feeling like I'm not able to do it, or it's difficult, or? There is no such bar on changing, but it's advisable that we take some advice on what would be appropriate meditation, especially for person who is beginning. We are helpful to take advice. What will be an appropriate meditation for me? And experimenting is no problem. There should be some settlement after some time. Okay, this is the type of meditation I would like to do. Okay? If you want to experiment with various things, you may find some suitable now, it's not suitable tomorrow. Then you will keep on fluctuating. तो इसको कंसल्ट करके अपनी मनस्थिति बता के अपने prominent संखारा को आइडेंटिफाई करके you take up a kamathan, a proper method of meditation adopt करो. Work on it for some time. Don't get swayed by me saying something, somebody else saying something, somebody else. You take a decision and then work on it for some time and see if it makes sense, if it does some good to you. And then when you practice it sufficiently, you got established in that process and you see that there are some benefits, then continue till you find that you got a plateau. अब तो इससे आगे कुछ हो नहीं रहा. Then you can think of again consulting somebody and changing. So for you, since I know you a bit, I would suggest you should consult before embarking on experiments. Because it's when Okay. there is people who can advise available, it's better to do that. Okay. Thank you, sir. Thanks a lot. Makes a lot of sense. जी पायल जी, आप म्यूट पर हैं। अभी इज इट ओके? यस यस। गलत वो दब गया था सर। मेरा मेहता में एकदम एकदम मन वो हो जाता, फैल जाता है, एकदम नहीं टिकता मन उसमें। मैंने वो सेल्फ से स्टार्ट करके जो वो ना होता है, तो मेरे से या एक या दो पर्सन ही होता है। मैंने बिसाइड्स मी 1 or 2 पर्सन ओनली, उसके बाद पूरा माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आई डोंट नो वेयर इट वंडर्स ऑफ टू। तो उसके लिए क्या, एंड दिस हैपेंस, आई हैव नोटिस मेहता में ज्यादा होता है ऐसा। तो उसके लिए कुछ वो है, रेमेडी है? इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना क्यों ऐसा हो रहा है.
when the mind gets into a complaining mode or some critical mode, then metta में difficulty होने लगती है. So one has to see what are the causes and conditions for distraction of the mind. So there's no standard answer for it. So one should find out कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा मेरा मन डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है और क्या वो किसी संस्कार के कारण है या कोई अर्जेंट काम आ गया वो ख्याल आ गया ये हो गया वो whatever. If there is some thought about somebody coming again and again, then we need to pause and wait and see क्या हो रहा है. Isn't it? नहीं, कोई कुछ वैसा वो नहीं था. जस्ट अभी तो शुरू ही किया था मैंने, नॉट विद एनी एजेंडा, अभी शुरू ही किया था. तो आज का नहीं, ये पहले भी मैंने बहुत बारी नोटिस किया है कि बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत जल्दी मेता में बहुत ज्यादा वंडर करता है और बहुत देर तक वंडर करता है. क्या कहाँ वॉन्डर करके जाता कहाँ है? कई थॉट्स में होता है, Which kind of वैरायटी thoughts? वैरायटी ऑफ थॉट्स. Which kind of thoughts? That needs to be investigated. ना? One thing is a general prescription कि भाई ठीक है अगर हाँ, अपने पे हो रहा है तो अपने पे ही करते रहो काफी देर या किसी अपने पे भी प्रिय अपने पे भी ज्यादा नहीं होता. मैंने ऐसा भी नहीं है कि अपने पे भी अगर मैं टिकाने की कोशिश करूं फॉर अ लॉन्ग टाइम तो मेरे पे भी नहीं ज्यादा टिकता वो. तो बहुत ज्यादा वॉन्डरिंग हो रही है देन यू प्रैक्टिस आनापाना स्ट्रांग ताकि वो समाधि स्ट्रांग हो. दैट इज अ जनरल प्रिस्क्रिप्शन. प्रैक्टिस ताकि समाधि स्ट्रांग हो जाए और मन का इधर उधर भटकना कम. अच्छा सर. और मतलब यही रहता है कि स्पेसिफिक जो हमारी धर्म विचय है ना उसको इस्तेमाल करके देखें कहाँ जा रहा है मन. क्या वो जनरली स्टैगर्ड मतलब इधर उधर डिस्ट्रैक्टिव रहता है तब तो समाधि पुष्ट करने की जरूरत है. अगर कोई स्पेसिफिक कारण से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है फिर उसको हैंडल करने की जरूरत है. अच्छा सर, एक और, जैसे जब व्हेन यू स्टार्ट और बॉडी रिलैक्स करने का होता है तो जब तक पाँव पर पहुंचते हैं ना, पाँव पूरा जम गया होता है, माने फ्रीज टाइप हो गया होता है. तो वो उस टाइप पे जैसे पूरे बॉडी पार्ट्स आप रिलैक्स कर पाते उस टाइप पाँव को नहीं कर पाते. तो रिवर्स पे करने में कोई कोई उसका कुछ वो है, प्रॉब्लम है? क्योंकि नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं. पाँव पे फील ही नहीं होता कुछ. तो आई डोंट नो व्हाट आई एम सपोज टू डू आफ्टर दैट. जब पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है तो क्या उसको छोड़ दो ऐसे ही, या हाँ ठीक है. देयर इज नो नीड टू गेट ओवरली कंसर्न अबाउट इट. ठीक है carry on with the other parts of it. You want to relax yourself. हाँ, वो कह रही है ना और वो in the स्ट्रेसफुल in बन the जाता है. मैंने हाँ रिलैक्स करने की जगह वो स्ट्रेस बन स्ट्रेसफुल. जाता है. पाँव में करना स्ट्रेस नहीं होता. क्या पाँव करो में तो इसका, ऐसे पाँव में तो करके. या तो सेंसेशन नहीं महसूस हो रही या पेन हो रहा है तो वो तो हमारी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है. तो वी डोंट टू मेक इट अ काइंड ऑफ नेसेसिटी कि मुझे हर पार्ट पे रिलैक्स करना है. आई नो what is my whether my state of mind is relaxed and body is relaxed. So we don't need to kind of mathematically do it and go through each and every organ of the body. Then just when you feel relaxed, see that the body is not tense. Usually shoulders में problem होती है, belly में होती है, या face पे होती है usually. बैक 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 बैक. That so you can just relax, and relaxation may or may not happen at your will. You can only make a intention to relax, and then start. Don't make a project out of relaxation. It will come by practice. As mind gets relaxed, body will relax. As body gets relaxed, mind will relax. Firstly, we should, when you sit, first thing we should do is make a determination. I'm going to sit and meditate for so much time. That means
Even if I can't meditate, even if I can't feel the breath, even if nothing is felt, I'll sit. Doesn't matter. And I'll not protest. I'll not get angry. I'll not get upset. ठीक है बैठे हैं चुपचाप बैठे नहीं मालूम पड़ रहा कुछ कोई बात patience that is a big thing to be learned actually enormously useful thing to be learned. I remember in one long course for 30 days with 10 days I couldn't feel anything 10 full days. And in another colleague of mine was sitting 45-day course for 30 days he couldn't feel anything just sitting waiting for something to feel. Very good. Sometimes you get upset. I mean, the mind shows its tricks. I want Don't this to feel happen. I want this to happen. So if you really understood the teaching, you can use that situation also to develop khanti and titikha. Okay, fine. That's a very good practice. कुछ नहीं महसूस हो रहा बैठे रहो 45 मिनट कहा है मैंने मैं बैठूंगा हिलूंगा नहीं ठीक है कुछ महसूस हो ना हो सांस बॉडी थॉट्स तो आते हैं ना उसी को देख लेंगे सर महसूस नहीं हो रहा का क्या मतलब कि सांस नहीं दिख रही या कुछ बॉडी में कोई फीलिंग नहीं आ रही सेंसेशन नहीं आ रही हम क्योंकि वी आर वर्किंग देयर इन दैट लॉन्ग कोर्स आफ्टर वर्किंग प्रॉपरली फॉर 10 days suddenly my body goes blank you can't feel anything so we sometimes go for a breath and observe breath and then again that also doesn't become easily available will not arise will not let aversion arise so this is our practice now we'll wait for the body to reveal its nature and then sit for developing khanti and patience forbearance very good qualities they are parmis why not so we reorient our process so that the mind does not get into a negativity so I'm just giving an example of that for the purpose of general principle of meditation that will try our best इसे सम्मा वायामो कहा जाता है अप्रिय अगर चित्तवृत्ति जाग रही है अप्रिय मन में स्टेट जा रही है उसको दूर रखेंगे प्रिय स्टेट को आने देंगे अगर जाग गई है तो उसको दूर करेंगे नहीं तो कोशिश करेंगे कि जागे ही ना दैट इज सम्मा वायाम डू दैट so in practice with in accordance with the teaching of Eightfold Path you can always find something to do there and something to be happy about something to be pleased about your practice कुछ और नहीं होगा पुण्यानुस्मृति कर लो क्या कर लो सर पुण्यानुस्मृति रिमेम्बर द गुड फीड्स यू हैव डन मन बिल्कुल बेचैन हो रहा है कुछ नहीं हो रहा ओके लेट मी रिकॉल माय गुड थिंग्स डीड्स दैट आई हैव डन और कुछ भी नहीं हो रहा तो इति पिछो तो कर ही सकते हैं बट विल नॉट गिव अप एंड नॉट गेट इरिटेटेड दैट्स सिंपल गिव अप मींस नॉट गेट इरिटेटेड कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा आई नो व्हाट टू डू आई नो सो मेनी ट्रिक्स इसीलिए कहा जाता है ना बहुश्रुत होना चाहिए वन शुड अंडरस्टैंड वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ हैंडलिंग द माइंड कुछ भी नहीं हो रहा तो इथिपिसो भगवा तो चांट कर सकते हैं एंड रिमेम्बर इथिपिस भगवा अच्छा भगवा का क्या मतलब होता है अरहन अरहन का क्या मतलब होता है कंटेम्पलेट ऑन दैट नित्याचरण संपन्न उसका क्या मतलब होता है लोक विदु and then similarly dhamma so do that beautiful the practicing you don't have to follow a stereotype you have to follow eightfold path सर ठीक है सर अब ये जो आपने बोला दिस फील्स अ बिट कॉन्ट्रडिक्टिंग टू आप जो आपने मेरे को बोला कि वो ऐसे तो अलग आई अलग ऑल्सो आदमी के लिए अलग अलग बोलना पड़ेगा ना बेटा ओके सर तुमको थोड़ा बहुत जानता हूँ ना ठीक है सर कभी तुमसे कहा कि तुम आके बात कर लो
तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है तो क्या कहूँ तुम्हें? See, Okay, this okay. is Thank you. there cannot be same advice given to everybody. गड़बड़ हो जाएगी बहुत. Okay, okay. You can't tell to Thank a you. doctor कि मुझे एक ही दवाई चाहिए, वही दवाई दे दो जो उसको दी थी, ऐसा तो नहीं होगा ना. वो वाली ज्यादा अच्छी थी, तुमने उसको ज्यादा अच्छी दे दी, मेरे को कड़वी दवाई दे रहे हो. Okay, sir. Thank you. ठीक. यस यशिका, आप पूछ लीजिए. तो सर I don't know, maybe it's because I have anxiety or I am so used to, I'm so attached to thinking, but um, मैं डिटर्मिन होती हूँ कि ओके आई विल सिट. मैं बैठती हूँ और मैं आनापान करने की कोशिश करती रहती हूँ. और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो मतलब एटलीस्ट 25 मिनट्स तक वो जो एफर्ट है वो मुझे फ़ोर्स नहीं लगता कि मुझे ज़बरदस्ती खुद को लाना पड़ रहा है. ऐसा नहीं कि थॉट्स कहीं जा नहीं रही, बट अगर वो जा रही हैं तो भी आई एम नॉट बीइंग हार्ड ऑन माय सेल्फ. आई एम लाइक ओके चली गई, वापस आ जाओ, यही सीखा है, ये करना है. बट देयर कम्स दिस पॉइंट वेयर it feels that I'm getting calmer and the breath is getting probably shorter. या तो मैंने सुना है तो मैं उसे बना रही हूँ, but anyway, so and in that very moment, um, it also feels like, oh no, let's just jump to another thought. You know, it's like I cannot just, the minute I realize कि अरे मैं बहुत ज्यादा subtle breath को पकड़ रही हूँ, वैसे ही ऐसा लगता है कि मैं एकदम से एक्साइट हो गई उस बारे में और फिर मन करता है नहीं अरे ये हुआ नहीं, कुछ चला गया. देन आई वांट टू ओपन माय आईज एंड आई more often than not open my eyes. um, so am I doing the same thing, which is like just oh, I missed that thought as well. Anyway, yeah, but like that's what's happening. जैसे what is generally recommended and our many senior teachers recommend that the type of meditation I should do or today or when I sit for meditation is, first I should relax the body. Secondly, I should assess what is the state of my mind. Okay, general advice. What is the state of my mind at this moment and what is the background state? So we decide the type of meditation based on that. So we should know what meditation to do when different mind states. Of course, Anapana is the universally applicable thing which can be done at most of the times. But one has to see why one is doing Anapana. What is the purpose? Does one want to quieten down मन को शांत करना है? Okay, शांत करने का अपना तरीका है. उसको भी उस शांत करने के लिए आनापान को अलग अलग तरह से किया जा सकता है. तो आप चाहे पूरा बहुत भी अशांत हो रहा है और लगता है कि हाँ शांत हो रहा है तो आप करते रहिए, घंटा में करते रहिए. लेकिन अगर मन शांत हो गया है, नहीं हो रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है. मन भटक रहा है, अगर आपने डिटर्मिनेशन किया है और किसी एक ही बात को लेके बार बार भटक रहा है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का कारण है. और अगर वो जनरली कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर भटक रहा है तो इसका मतलब माइंड की बैकग्राउंड स्टेट भी डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा, बहुत एजिटेशन है किसी कारण से. तो उसको हमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. मन अगर आनापान से शांत नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा एजिटेशन हो रही है, तो कुछ और करना. बट दैट हैज टू बी डिसाइडेड वाइजली. You should decide it. Either you have the wisdom to decide it,
and you're sure about it, or you can't consult somebody. But if you feel, yeah, I know, I have understood, I've been practicing for so long, then that's perfectly fine. So then stick. If you want to calm down the mind, then stick to Anapana. अगर वो हल्के सांस पे नहीं मन में आता तो वगैरह सांस पे काम करो. वर्क ऑन डीप ब्रीदिंग फॉर लॉन्ग टाइम. 10 मिनट 15 मिनट मन अपने शांत हो जाए. आँख खुल गई तो बंद कर लो. क्या दिक्कत है भाई? अब मन में जो थोड़ी बेचैनी हुई, हड़बड़ हुई, आँख खोल दी, मन नहीं कर रहा, क्या रहा है, नहीं आँख नहीं खोलनी है, rather than getting agitated about it, close the eyes and start. No big deal. So we should be able to, one of the qualities of a wholesome mind is it should be flexible, it should be adjustable, it should be able to adjust to the situations, it should be able to change the perception, it should be able to mold itself in accordance with the situation. Now, for that purpose, certain amount of knowledge is needed कि कौन सी meditation किस परिस्थिति में useful रहती है. तो अगर वो है तो हम can practice. जैसे मैं भी पायल को भी कह रहा था, अगर मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है, बिल्कुल टिक ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा, तो use the factor of Saddha. You can use the Anusatis, Punyanusati, you can use Charanusati, you can use Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati. बिल्कुल भी नहीं मानता तो मरणानुसति करो. Sit and contemplate that if I were to die just now, what will happen to me in the next moment? If I die with an agitated mind, I'll be born as an animal. And maybe that stirs you up, and then it's no, I should be careful. So one has to really appropriately devise. So many methods we have discussed over the years now. We should know when to apply what. And for that, primary requirement is I should be able to see myself. मेरे मन में क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर से क्या हो रहा है, गहराई से क्या हो रहा है. जब मन शांत हो जाए तो फिर और उसको गहराई से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या. अब मुझे इतनी देर ध्यान किया, चाहे 30 मिनट हो गए, लग रहा है कि मन शांत है, तो वेरी गुड. लेट मी सिट क्वाइटली एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन. And again, there's some agitation going on in the body, in the mind, or some thoughts arising again and again. Then I know where I am stuck. It could be anything. It could be my speech, it could be my precepts, it could be my lack of samadhi, it could be my lack of panya. Anything can upset the mind and creates disturbances which may last few days. तो हमको इन्वेस्टिगेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. वो आदत डालनी पड़ेगी बार बार बार, तो पता चलने लगे. और ना पता चले तो किसी सीनियर के साथ जाके बात कर लो, उससे पूछ लो भाई क्या करना है, ऐसी स्थिति हो रही है बार बार, देन लेट अस फाइंड आउट. थैंक यू.